Good morning, all of you. Today we'll discuss physics topic of class 11, conversion of one unit of system into other system. Now discuss the first numerical of this topic. Numerical first is convert 1 Newton into dyne. आपको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है कि 1 न्यूटन को हम डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट, 1 न्यूटन it is the unit of force and it is measured in MK system. Dyne, it is the unit of force in CGS system. First of all, force unit is Newton. Dimension formula of force is M1 L1 T minus 2. Now dimension of mass A equal to 1, dimension of length B equal to 1, dimension of time is C equal to minus 2. Now convert the MK system into CGS system. Because mass MKS is 1 kg, length measured in MKS 1 meter, time measured in 1 second, and similarly CGS system M2 equal to 1 gram, L2 equal to 1 centimeter, T1 equal to 1 second, where N1 equal to 1. Now using the formula of conversion of one system into another system of units, N2 equal to N1 U1 upon U2, where U1 is equal to M1 L1 T1 की पावर A, B और C. Similarly N2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C. Now using the values, N1 is all given is 1, M1 equal to 1 kg, M2 equal to 1 gram, L1 equal to 1 meter, L2 equal to 1 centimeter, T1 equal to 1 second, T2 equal to 1 second minus 2. 1 kg 1000 gram upon gram cancel out, 1 meter 100 centimeter is cancel out, 1 second is cancel out. Remain quantity 1 into 10 to the power 3 into 10 to the power 2. Now N2 equal to 10 to the power 5. इट मीन्स 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम. 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 टाइम थे. ये जो टॉपिक था लास्ट वीडियो में कराया था, लेकिन लास्ट वीडियो में कुछ वीडियो की मिक्सिंग के कारण टॉपिक कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से रिपीट किया है. इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल 2, कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 joule into अर्ग. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 joule into अर्ग. सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल, दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 joule means N1 is equal to 1. You will find N2 where energy has dimension is M1 L2 T minus 2. Energy dimension has M1 L2 T minus 2, where A equal to 1, B equal to 2 और C equal to minus 2. A equal to 1, B equal to 2, C equal to minus 2. Using formula where N2 equal to N1, M1 upon M2 की पावर A, L1 upon L2 की पावर B and T1 upon T2 की पावर C. Now M1 equal to 1 kg in MK system, L1 equal to 1 meter in MK system, T1 equal to 1 second. Next, where M2 equal to 1 gram, L2 equal to 1 centimeter and T2 equal to 1 second. Now putting the values, where N2 equal to N1 equal to 1, M1 1 kg upon M2 1 gram, A की पावर 1 तो A1, L1 equal to 1 meter, L2 equal to 1 centimeter की पावर 2, 1 second upon 1 second की पावर minus 2. Convert these values. 1 into में 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1 meter इक्वल टू 100 सेंटीमीटर
upon 1 cm square. This is cancel out. Gram is cancel out, centimeter is cancel out. Now the values of N2 equal to 10 की power 3, 1 into में 10 की power 3, 10 की power 2, 10 की power 4, then N2 equal to 10 की power 7, means 1 joule is equal to the 10 की power 7 अर्ग. 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं. 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग. Now note down these questions. This is N1 equal to 1. You will find N2. Energy given M1 L2 T minus 2. A has 1, B has 2, C has minus 2. Using the formula M1 1 kg, L1 1 meter, T1 1 second, M2 1 gram. CS system L2 1 centimeter, T2 1 second. Put these values. 1 kilogram change out to 1000 gram and 1 meter change out 100 centimeters. Solve this problem. This is 1 joule equal to 10 की power 1 joule equal to 10 की power 7 अर्ग. Now next questions के बाद